Alright, now to understand what a discount factor is an infinitely repeated game. Now, what is an infinitely repeated game? An infinitely repeated game is basically one that goes on infinitely without any definite end. Pretty self-explanatory. मतलब खुद ही चल मतलब forever it kind of goes on. Okay, like there is no certain end to it. Okay, it keeps repeating and repeating and repeating and repeating. So इसमें एक term आता है discount factor. Now what discount factor is that it tells us how much a player cares about the future. Okay, a discount factor is always between 0 and 1. If it is high, that means the future matters a lot to the player, and if it is low, then the only thing that matters to the player is today. Okay, if it is 0, matlab, it is 0, then all that matters to the player is today. If it is 1, then all that matters is tomorrow. Okay, so accordingly, the values range between 0 and 1. Now, what does discount factor mean? So, a discount factor shows how patient a player is. ठीक है क्या represent करता है? It represents how patient a player is. Now, if it shows a high value, means it will wait for future rewards. Okay, the player is willing to be patient and wait for future rewards. If it is low, that means the जो player है, it's gonna take its rewards today. It is not going to care about tomorrow. It is going to take the quickest possible satisfaction route possible. Probably you. ठीक है, that is probably what you do with your life. You're gonna sacrifice anything that is going to come tomorrow in order to get the quickest means of satisfaction that you can get today. ठीक है, so your discount factor is probably at a zero, at one definite zero. ठीक है. Now, what comes here is that it represents time preference. ठीक है? If it likes long-term benefits, it will be high. If it likes quick benefits, it will be low. Again, new. Now, what what it does is that it converts future payoffs to present value. ठीक है now what does that mean? That take it as like how future money जो if you have 10 rupees today, that 10 rupees will be worth not exactly वो 10 rupees का value will not be 10 rupees 3 days from not 3 days from now, like 1 year from now रुपया गिरेगा, राइट? तुम उसको बैंक में रखोगे तो वो 10 रुपये नहीं रहेगा, ठीक है, रुपया गिरेगा, वो 10 रुपये 9 रुपये बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपया बन जाएगा, ठीक है. So basically like तो just like that it converts to like if you're going to put that in technical terms, what happens is that in repeated games future payoffs are multiplied by their discount factors to compute their present value. ठीक है तो future the further the future payoff is the more it is discounted. ठीक है तो बेसिकली देखो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि अगर हमारा फैक्टर 0.8 है, अ पे ऑफ ऑफ 100 रुपीज 2 राउंड्स अहेड इज वर्थ, ये एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसको स्क्वायर इनटू द रुपी का अमाउंट, दैट इज 64 रुपीज टुडे. ठीक है तो मतलब जो कल की वैल्यू है वो हमने आज में ही पकड़ ली और उसके हिसाब से हम चलेंगे कि मुझे फ्यूचर में कितना मिलने वाला है. तो मतलब अगर मुझे मेरे पास अभी 100 रुपए है तो 2 राउंड के बाद वो 64 रुपीज बन जाएगा. ठीक है तो वो ही वैल्यू हम लोग मतलब उसको मतलब हम करंटली पकड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट कि हमको आगे कि हमको फ्यूचर को या फिर अभी को ज़्यादा वेट देना चाहिए. ठीक है नेक्स्ट इज दैट हाई फैक्टर high cooperation. ठीक है so they both are like directly proportional. So basically if the discount factor is high, that means it is close to 1. That means that the player का जो future payoff रहेगा it is just as much as the current one. ठीक है जो future payoff रहेगा आज के payoff से वो काफ़ी close है. If they are willing to cooperate today to secure long term benefits instead of defecting for immediate profit. ठीक है तो आज मैं कॉपरेट करती हूँ यानी कि मैं कल का जो प्रॉफिट होएगा मुझे ये लॉन्ग टर्म गेम खेल के जो बेनिफिट मिल सकता है वो मैं खेलूंगी इंस्टेड ऑफ केविंग इन टू अ शॉर्ट term benefit and to a short term benefit that will give me an immediate profit. ठीक है तो मतलब if I cooperate today
आई विल कीप अर्निंग अगेन एंड अगेन लेटर। ठीक है, अगर इफ आई डोंट कॉपरेट टुडे, इफ मैंने उसको धोखा दे दिया टू द सेकंड प्लेयर, तो आई विल गेट एन इमीडिएट बेनिफिट, बट देन इन फ्यूचर, फ्यूचर में मुझे भी धोखा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक रिपीटेड गेम है, आगे कुछ भी हो सकता है। द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस इज बेसिकली कि हम रिपीटेडली खेल रहे हैं। अब मैं अगर कोऑपरेट करूंगी, ठीक है, मैंने कोऑपरेट किया, तो सामने वाला भी कोऑपरेट करेगा, राइट, क्योंकि मैं कल के बारे में सोच रही हूँ, मुझे बस आज के बारे में नहीं सोच रहा। आज अगर मैंने उसको धोखा दे दिया तो मुझे वैल्यू, मुझे पे ऑफ मिल जाएगा, सडन पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये कब हो सकता था? अगर ये एक नॉन इनफाइनाइट गेम होता। ठीक है, बट ये एक इनफाइनाइट गेम है, तो कल आएगा। ठीक है, कल आएगा मतलब क्या? कल आएगा मतलब कल वो मुझे भी धोखा दे सकता है, और वो भी अपने इमीडिएट बेनिफिट के लिए, मुझे लाइक फॉर हिज ओन इमीडिएट बेनिफिट आई कैन ऑल्सो बी किक्ड, राइट। तो दैट, टू अवॉइड दैट, फिर मेरा लॉस हो जाएगा ना। टू अवॉइड दैट, अगर मैं कॉपरेट करूँ तो सामने वाला भी कॉपरेट करेगा, एंड वी बोथ विल कीप गेटिंग, वी बोथ विल कीप गेटिंग ब्राउनी पॉइंट्स। ठीक है, सो बेसिकली अगर हाई फैक्टर है, अगर मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा तो कॉपरेशन बढ़ेगा। अगर मैंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा एंड मैंने बस आज के बारे में सोचा, इमीडिएट बेनिफिट के बारे में सोचा, सिर्फ खुद के बारे में सोचा, तो कल मुझे, मेरे साथ भी वही हो सकता है थ्रू द सामने वाला। ठीक है, तो basically, that is how a low factor that is close to zero indicates future payoffs are heavily discounted. That is in technical terms if you write it. ठीक है, what's next? Infinite repetition and total payoff. So what does this mean? So if the goes on forever, ठीक है, so the payoff of each round, total payoff का value is basically payoff of each round divided by one minus the factor, one minus the discount factor. ठीक है, एक formula, you have to explain that. That is the sixth point. Now what is the next point is that punishment strategies work when discount is high. ठीक है, now how is that? If a player cares about the future, they avoid cheating because punishment means I will lose future rewards which I care about. Like I explained, सामने वाला कल को धोखा दे सकता है. That if that happens, you will lose your future rewards, right? So वही. So threats for games like tic-tac-toe keep players in line. ठीक है, they keep players in line as in they keep them from defecting. अगर तुम धोखा दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें धोखा दे सकता है. That is the entire strategy of this. ठीक है, now what's next is that you have to balance. ठीक है, short term versus long term, you have to balance your todays and your tomorrows. ठीक है, if the discount factor, the discount factor, not if, the discount factor does most definitely decide the balance. High discount factor मतलब you care more about the future than you care about your present. That means cooperation. If it is low, then you care more about your present than you do about your future. That means you are going to cheat. Okay, now then you have a real world interpretation. Now, real represents trust, reputation, or patience in repeated interactions. Now, hearing about this, बहुत probably similar sound करेगा तुम लोगों को about uh, cheating today for an immediate benefit or playing the long game. Obviously, like बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये reflect होता है in your daily relationships, in your personal relationships, in business, in take it in any scenario, right? तुम लोग को short term benefit मिल जाएगा by cheating. ठीक है, like very obvious example. ठीक है, you have somebody, तुम लोग ने for short term benefit तुम लोग ने cheat किया वो person पे, and then you got a very short reward for a very short amount of time. ठीक है, but what did you do? You lost a long term partner. You lost a long term partner because you, for a small amount of, for a small short term benefit के लिए एक long term चीज खो दी, right? So that is how it works. Tomorrow this can also happen to you. कि आज के लिए कल को sacrifice करना, या कल के लिए आज को sacrifice करना is represented by the discount factor. Summary में conclusion लिख देना. That is it.